kids, I'm Priyanka and I'm back again with my new video of English Class 8 Chapter 3 The Selfish Giant. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant garden. हर दिन आफ्टरनून में क्या होता था कि स्कूल के बाद जब चिल्ड्रंस घर वापस आते थे तो वो लोग गार्डन में जाते थे खेलने के लिए. एक बहुत बड़ा सा गार्डन था, वहाँ वो लोग जाते थे खेलने के लिए. इट वॉज़ अ लार्ज लवली गार्डन. वहाँ वो बहुत ही प्यारा गार्डन था. वहाँ सॉफ्ट ग्रीन ग्रासेस थे और चारों ओर बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे जैसे कि स्टार्स हो. एंड दे वर ऑल ओवर द ग्रासेस एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज. वहाँ पे कितने पीच ट्री थे? 12 पीच ट्री थे. दैट इज स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इन टू डेलिकेट ब्लूसम ऑफ पिंक एंड पर्ल. और स्प्रिंग के टाइम में वो ब्लूसम करते थे पिंक और पर्ल कलर में. एंड इन द ऑटम bore rich fruit. और ऑटम में वो फ्रूट्स देते थे. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. और स्प्रिंग के टाइम में क्या होता था कि सारे जो बर्ड्स हैं उस ट्री पे बैठ के बहुत प्यारा गाना गाते थे कि चिल्ड्रन बच्चे अपना खेलना छोड़ के उनका गाना सुनना बैठ जाते थे. हाउ हैप्पी वी वेयर हेयर. हमें यहाँ पे कितना अच्छा लगता था. दे क्राइड टू ईच अदर. वन डे द जाइंट केम बैक. एक दिन वहाँ पे एक बड़ा सा जाइंट वापस आया. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड. वहाँ पे वो अपने फ्रेंड को विजिट करने आया था जिसका नाम था कॉर्निश ऑग्री. एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years. और वहाँ पे वो उसके साथ 7 साल से रहा था. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो वहाँ पे आया तो उसने देखा कि यहाँ पे तो गार्डन में बच्चे खेल रहे. What are you doing here? He cried in a very gruff voice. बहुत गुस्से से वो चिल्लाया उन बच्चों को कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो. और वो सारे बच्चे वहाँ से डर के भाग गए. My garden is my own garden. ये मेरा गार्डन है और ये सिर्फ मेरा गार्डन है. Anyone can understand that and I'll allow nobody to play in it. और जिसको ये समझ में नहीं आता उनको मैं यहाँ पे खेलने नहीं दूंगा और यहाँ पे सिर्फ मैं खेलूँगा. So he built a high wall all around it. तो उसने क्या किया, पूरे गार्डन के अराउंड बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बना दी और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड चिपका दिया. These passers will be prosecuted. He was a very selfish giant. वो बहुत ही ज़्यादा selfish giant था. The poor children had nowhere to play. अब उनके पास कहीं पे भी कुछ खेलने को नहीं था. They tried to play on the road, but the road was very dusty. वो रोड में खेलने का ट्राई करते बट जो रोड था वो बहुत डस्टी था. वहाँ बहुत हार्ड स्टोन थे जो उनको अच्छा नहीं लगता था. They used to wander round the high walls inside. वो लोग उस वॉल के अराउंड गोल गोल घूमते थे. एंड हाउ हैप्पी वी वर देयर. और सोचते थे कि हम कितने खुश थे जब हम वहाँ पर थे. देन द स्प्रिंग केम. अब स्प्रिंग आ गया एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लूसम एंड लिटिल बर्ड. और पूरी कंट्री में चारों तरफ हर जगह ब्लूसम और बर्ड्स थे. Only in a garden of a selfish giant it was still winter. But सिर्फ उस giant के गार्डन में विंटर था. The bird did not care to sing in it. Birds वहाँ पे गाना नहीं गाती थी. There were no children. और वहाँ पे कोई भी बच्चे नहीं थे. The tree forgot to blossom. Trees ने blossom करना छोड़ दिया. Once a beautiful flower put its head out of the grass. But when it saw the notice board, एक बार क्या हुआ कि मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर ग्रास के ऊपर से बाहर आया. बट उसने जैसे ही नोटिस बोर्ड देखा, इट वॉज सो सॉरी फॉर चिल्ड्रन. उसको बहुत बुरा लगा बच्चों के लिए और वो वापस से चला गया ग्राउंड में एंड वेंट टू स्लीप. और वापस से सोने लगी. द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वेयर द स्नो एंड द फ्रोस्ट. जिनको अच्छा लग रहा था वो थे सिर्फ स्नो और फ्रोस्ट. स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन. स्प्रिंग इस गार्डन में आना छोड़ दिया. दे क्राइड. So we will live here all the year round. The snow covered up the grass with her great white cloak, and the frost painted it tree silver. Then they invited the north wind to stay with there, and he came. He wrapped in fur, and he rode all around the garden. He blew the chimney pots down. This is delightful spot, he said. We must ask Hale to visit.
अब एक काम करो, स्टॉर्म तो आ ही गया है यहाँ पे, अब हेल को भी बुला लो. सो द हेल केम एवरी डे फॉर 3 hours. ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल. हर दिन 3 घंटे वहाँ पे हेल गिरता और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती. एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड गार्डन as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. I cannot understand why spring is so late is coming, said the selfish giant as he sat at the window and looked out in the cold white giant. I hope there will be change in the weather. बोलता है शायद हो सकता है थोड़े दिन के बाद changes आए. But the spring never came nor the summer. But ना वहाँ पे spring आया ना summer आया. The autumn gave golden fruit to every garden, but the giant garden she gave none. सारे गार्डन में ऑटम फ्रूट्स होते थे लेकिन जाइंट गार्डन में कुछ भी नहीं होता था. ही इज़ टू सेल्फिश शी सेड, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर हेयर. वो बहुत सेल्फिश है इसलिए हमेशा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विंटर है. द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट, द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज. One morning, the giant was lying awake in the bed when he heard somebody lovely music. एक दिन वो बेड पे लेटा हुआ था कि उसको बहुत लवली म्यूजिक सुनाई दिया. ही इट साउंडेड सो स्वीट. उसको ये साउंड बहुत पसंद आया. ही थॉट इट मस्ट बी द किंग म्यूजिशियन पासिंग बाय. इसको लगा कि शायद कोई किंग का म्यूजिशियन होगा जो यहाँ से गुजर रहा होगा. It was really only a little limit singing outside his window, but it was so long since he heard a bird singing in the garden that it seemed to him be the most beautiful music in the world. Then the hail stopped dancing over his head. Hail ruk gaya, the north wind ceased roaring, and the delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has came at last. वो बोलता है कि शायद spring आ गया है. And he jumped out the bed and looked out. He saw a most beautiful sight. वो उसने वहाँ पे सबसे beautiful sight देखा. Through a little hole in the wall, the children had creeped in. They were sitting in the branches. बच्चे अंदर आ गए थे और वो branches में बैठे हुए थे. In every tree that he could see, there was little child. हर एक tree में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे. And the tree was so glad to have the children back again that they covered themselves with blossom and were waving their arms gently above the children's head. The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up in the green grasses and laughing. It was a lovely scene. Only in the one corner it was still winter. लेकिन एक corner में अभी भी winter था. It was the farthest corner of the garden. सबसे दूर का corner था वो garden का, and it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up the branch of the tree, and he was wandering all around it, crying bitterly. वहाँ खड़े होके वो रो रहा था कि मैं इस पे नहीं चढ़ पा रहा हूँ. The poor tree was still covered with frost and snow, and the north wind has still blowing above it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down and low as it could, but the boy was too tiny. Branch नीचे होने की कोशिश तो किया, but जो boy था वो बहुत छोटा था. The giant heart melt and he looked out. Giant का जो दिल था वो melt हो गया और वो बाहर आया. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring could not came here. I'll put the poor boy on the top of the tree, and I will knock down the walls, and my garden shall be children's playground for ever and ever. He was really very sorry for that what he done. So he crept downstairs. वो नीचे आया, door open किया, softly वहाँ तक गया, and he went into the out the garden. But when the children saw, they were so frightened that they all ran away. But जैसे ही वो बाहर आया, बच्चे फिर से डर गए और वहाँ से भाग गए. And the garden became winter again. और garden फिर से winter हो गया. Only the little boy did not run. सिर्फ एक छोटा बच्चा नहीं दौड़ा. For his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. The giant stole up behind him and took him gently in his hand, put him up on the tree, and the tree broke out at once to blossom. And the bird came and sang on it, and the little boy stretched out his 2 arms and flung them round the giant's neck and kissed him. The other children, when they saw that the giant was not wicked and any longer, came running back, and with them came the spring. In the garden now, little children, said the giant, and it took a great axe and knocked down the wall.
And when the people were going to the market at 12 o'clock, they found Giant playing with the children in the most beautiful garden they have ever seen. All day long they played, and in the evening they came to Giant to bid him goodbye. But where is your little company? He said. A boy I put on the tree. The giant loved him the best because he kissed him. We don't know, answered the children. अब वो जो जाइंट था वो छोटे बच्चे को ढूंढ रहा था, लेकिन वो चला गया था. You must tell him to be sure and come tomorrow. वो बोलता है कि तुम उसे भी कल लेके आना, said the giant. But the children said that they don't know where he lived. लेकिन सारे बच्चों ने बोला हमें नहीं पता वो कहाँ रहता है, and had ever seen him before. और हमने उसे पहले कभी देखा भी नहीं है. जाइंट को बहुत बुरा लगा. Every afternoon, when school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind to all the children, yet he longed to the little friend, as often spoke to him. How I could like to see him, he used to say. Years went by. The giant grew old and feeble. He could not play about any more. So he sat in a huge armchair and watched the children to play the games and admired the garden. I had many beautiful flowers, he said, but this children are most beautiful flower of all. One winter morning he looked out in the window and he saw dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it would merely the spring asleep and that the flower were resting. Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked and looked. It certainly was marvelous sight. It was the farthest corner of the garden, and a tree quite covered with lovely white blossom. Its branches were golden. इसके जो branches थे वो golden थे, silver fruits थे, and underneath it could stall a little boy. और उसके नीचे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था. Downstairs ran the giant in great joy, and out in the garden he hastened across the grass and came near the child. And he came quite close to his face, grew red with anger. He said, who had dared to wander here? For the palms of the child hand were the print of two nails, and the print of two nails were the little feet. Who had dared to warn thee? Cried the giant. Tell me that I may take my big sword and slay him. Nah, answered the child, but these were the words of love. Who hearts thou? Said the giant, as a strange awe fell on him, and he knelt before the little child. And the child smiled to the giant and said to him, you let me play once in your garden today. You shall come with me to my garden, which is paradise. And when the child ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossom. And the story is written by Oscar Wilde. Thank you.